टोयोटा की 2022-2024 की गाड़ियाँ E20 कंपैटिबल हैं। उनके ऑफिशियल तो कहते हैं यस, बट टोयोटा ऑफिशियल वेबसाइट पे यूज़र मैनुअल में चेक करके यू विल बी शॉक्ड। लेट्स गो वेब ब्राउज़र पे। लेट्स फाइंड आउट अबाउट टोयोटा यूज़र मैनुअल। यस, so this is the official website of Toyota Bharat, and we'll select the most selling model Glanza for now, and we'll take about the cars which being sold in 2023, and let's search it. Yeah, so here we can see the Glanza owner's manual CNG option. Let's find out about ethanol. Yes, so guys, 2023 की Glanza, Toyota Glanza, if you can see about the ethanol, they are no more than 10% ethanol. So जो कोई भी Glanza, Toyota Glanza 2023 की यूज़ कर रहा है, उसका ethanol percentage is up to 10%. That is, it should be less than E20. एंड अगर हम कोई और मॉडल चेक करें, सो यस, या, सो फॉर एग्जांपल अर्बन क्रूज़र हाईराइडर. सो लेट्स टेक द 2022 मॉडल. 2025 में तो आई थिंक दे डेफिनेटली हैज़ प्रोवाइडेड द E20 compatible vehicles, but let's find out for the 2022 Hyryder ethanol. So no surprises. Yes, so here it is mentioned like not more than 10%, but if it is more than 20% ethanol, may have performance variation. So if you are not satisfied with the fuel economy of your vehicle when you are using petrol alcohol blend, you should switch back to unleaded petrol. See guys, this is what I was talking about. सो मैं भी आपके साथ ये लिंक शेयर करूँगा. आप टोयोटा की सारी गाड़ियों का मॉडल वाइज, ईयर वाइज चेक कर सकते हैं. इफ़ यू आर अ टोयोटा कार ओनर, definitely you should check the user manual, owner manual. If you don't have the hard copy with you, you can go to this website. I'll add the link in my video description. You can check the link and you can check the link and you can find out what you need to do. If your vehicle is not E20 compatible, you can check with your insurance holder as well. And let's see what's gonna happen in coming days, months and years. I hope our vehicle remains safe from this E20. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, डू सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो with all the Toyota owners, friends you have or relatives you have, and do hit the bell icon so that you can get the notification when my next video is up. Thank you guys, take care.